normal, जुगाड़ू, least complicated, no fuss makeup, time pass makeup. Mascara. वाह Science, वाह Left, right. मैं हिला रही हूँ कैसा कैसा है? है Hello, my precious people. What is up? Hope you all are doing pretty well. This is your girl Vin, and welcome to my YouTube channel, The Sassy Leo. Guys, today's video is all about copying a celebrity makeup, and from the title आपको समझ आ ही गया होगा that today I will be copying Parineeti Chopra's normal, जुगाड़ू, least complicated, no fuss makeup, time pass makeup. First of all, she is such a cutie and her voice, wow, her song माना के हम यार नहीं is still my favorite, and to my surprise उन्होंने 4 to 5 products में अपना full face of makeup किया है, and I am also trying to do so. Let's see how it turns out. If you're interested, then please keep on watching this video till the very end. But before moving ahead, I would love it if you subscribe to my channel if you haven't already, and if you're seeing this face for the very first time, hi, I am the Sassy Leovin, and I would also love it if you subscribe to my channel by clicking the underneath red subscribe button, integrate, and hitting the bell icon besides it. And now without any further delay, let's just gear up and get going. Let's start. And उन्होंने start किया है directly with the foundation. She did not apply any kind of primer. I don't know why these guys don't use primer. जब मैंने आलिया भट्ट का makeup routine copy किया था तब भी she skipped her primer. But I am so scared to skip my primer because sensitive acne prone skin, so I cannot afford to skip primer, so I will be applying my primer because it creates a barrier between your makeup and your skin. So yeah, okay, primer is done. Now she started with the foundation, so here I am using Maybelline Fit Me, but one problem, she had the foundation with pump packaging, बट हमारे पास नहीं है, सो हम अप्रॉक्सीमेटली मेजर करके वील टेक छोटा सा बूंद, एंड शी लिटरली टुक द फाउंडेशन ऑन टू द कैप बिकॉज शी फील्स कि हाथ पे फाउंडेशन लेना इज़ अनहाइजीनिक. वैसे आई एम ऑल्सो अ हाइजीन स्पेसिफिक पर्सन, बट फॉर मी दिस इज रियली अनहाइजीनिक बिकॉज वन आई हैव नेवर डन दिस. आई होप माई स्किन डजंट ब्रेक आउट. I hope you understand, okay? The next thing, she took a brush. I am using this Kabuki brush. She said that she doesn't like soft brushes. She likes hard brushes. And I was like, huh? Hard brushes? Then I stopped for a moment, took a deep breath, gathered my courage, and with a calm and composed mind, I thought maybe she's trying to say that she likes to use dense brushes. बिकॉज जहाँ मैंने हार्ड ब्रशेज यूज़ कर लिए वो मेरे स्किन को पोक करेंगे एंड माई स्किन विल स्टार्ट ब्रेकिंग आउट. सो या मैंने डायरेक्टली ब्रश से ही अप्लाई किया था. सो शी फर्स्ट अप्लाइड इट लाइक दिस, देन शी ब्लेंडेड इट ऑल ओवर. ओके, मिरर नाम की चीज़ तो हमारे पास भी नहीं है, जस्ट लाइक हर. सो उन्होंने यूज़ किया था आई शेडो पैलेट का मिरर, हम यूज़ करेंगे कॉम्पैक्ट का मिरर. सो या नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने फाउंडेशन अपने आईलिड पे अप्लाई क्यों नहीं किया, बिकॉज उन्हें भी नहीं किया. सो या ओके, फाउंडेशन इज डन, बट वन थिंग दैट इज़ थोड़ा सा ऑफ कि शी डिड नॉट कवर हर नेक इवन अ बिट, एंड यू नो वॉट, फाउंडेशन यहाँ का ख़त्म हो गया. Now what do we do? Just a tad bit of foundation मैं यूज़ कर रही हूँ because let me tell you, ये one dip makeup challenge नहीं है, okay? It is essential. So and covering my ears also, but still I have not covered my eyelids. All right. Now it's time for the lips directly. Yes, you heard me right. So उन्होंने एक nude lipstick apply करी थी, and we are also going to do the same. It's really been a while कि मैंने बुलेट लिपस्टिक यूज़ नहीं करी है. सो या वी आर गोइंग टू डू इट टुडे. डन. विथ द सेम लिपस्टिक शी स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आईज and she applies
blush in the form of a C, and she blends it with her fingers itself. This is actually giving a lifted look, you know. With the same lipstick, she picks the pigment onto the brush, again a dense brush, and she applies it on the whole of her lid. She uses the same color on the lips, blush as well as the eyes because it makes her look fresh and bright. So yeah, I'm doing the same. Guys, am I looking fresh and bright? And then she does this thoda sa blending. We are done using our cream products and to my surprise, she did not set her face using any kind of powder or a compact. So guess what? We are also not going to set our face. Yes, you got me right. Next, she took a brown liner, be it eyeliner, lip liner, kajal, any kind of a brown pencil. She draws a little wing like this, like यहाँ से she just does this so that ये अगर extend की जाए तो उनके eyebrows से मिलेगी. So yeah, we are also doing that. Oh, this actually looks good है ना. उसके बाद what she does is just merges the liner a little bit with her fingers into the eyeshadow so that eyeshadow में थोड़ी सी grading आ जाए. वाह science, वाह. Now it's time for mascara. So basically what we need to do is मैं हमेशा से mascara कैसे लगाती हूँ, literally I wiggle the lashes and then I move बाहर के साइड, ऊपर के साइड. Now what we need to do, परिणीति told, just keep it at the base of your lashes and हमें wiggle नहीं करना है, हमें left right करना है. ओहो हो, can you see? This actually works. I am telling you, अब से हम हमेशा left right करके ही mascara लगाएंगे. Because it actually makes a difference. Can you see? Look. Thank you Pariniti for such a great technique. Lastly, she does eyebrows and वो eyebrow pencil use नहीं कर रही हैं. She is using eyebrow filler. हमारे पास eyebrow filler नहीं है guys. हमारे पास है तो सिर्फ ये मस्कारा है which I am so super duper scared to use because ये black है. इसीलिए मैं literally इसका पूरा excess product remove कर रही हूँ and इसी से हम आज काम चलाने वाले हैं. So yeah, taking a deep breath, let's do this खतरों के खिलाड़ी वाला thing now. मैं literally बहुत आराम से हल्का लगा रही हूँ. Okay, उन्होंने मस्कारा लगाते टाइम ब्लेंडर किया था, मैंने आईब्राउज करते टाइम ब्लेंडर किया है, so मैं इसे फैला रही हूँ just like she said. Good. And this is how the look turned out, you guys. कैसा है? What do you guys think? Please tell me in the comments, okay? Now, here comes the fun part. We are going to judge this makeup. So for the base, although हमने base set नहीं किया है, but I don't feel that much need to set the face because हमने बहुत कम फाउंडेशन अप्लाई किया है. सो या इसीलिए बेस बिल्कुल भी केकी टर्न आउट नहीं हुआ है. हमने किए थे लिप्स, ब्लश एंड आईज विद द सेम प्रोडक्ट. लिप्स परफेक्ट. दिस सी ब्लश टेक्निक, दिस एक्चुअली लुक्स वेरी गुड. नाउ फॉर द आईज, जो भी हमने लिपस्टिक पिगमेंट यूज़ किया है आईज पे विदाउट एनी काइंड ऑफ अ बेस प्रोडक्ट, तो फॉर दैट आई फील कि जो भी मेरे फाइन लाइन्स है उसमें हल्की लिपस्टिक के स्ट्रोक सेटल डाउन हो चुके हैं. बिकॉज हमने कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया था, नो आई प्राइमर. मेरी आईलिड थोड़ी ज़्यादा ऑयली थी ड्यू टू द मॉइस्चराइजर and of course our skin secretes oil, so that might be the reason. Let's see if the camera could capture this. हुआ है क्या capture? Next, the mascara. Such a good hack, I tell you guys. Amazing. I am definitely going to use it for the rest of my life now because इतना प्यारा mascara apply हुआ है. Lastly, coming to the brows.
सो मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया है ब्राउज पे, सो ब्राउज आर नॉट लुकिंग दैट बैड, बट द मोमेंट आई फील माई ब्राउज इतनी ज़्यादा कड़क हो चुकी है जस्ट लाइक माई लैशेस. सो द रीज़न अगेन माइट बी बिकॉज हमने ब्राउ प्रोडक्ट के जगह मस्कारा अप्लाई किया है, सो दैट माइट बी द केस. So all in all, I really like how this look turned out. What do you guys think about it? Please tell me in the comments. Loki, I started enjoying filming this video so much, and if you like such kind of videos, then please give it a big fat thumbs up, share as much as possible, subscribe to my channel and follow me on all my socials, link in the description bar below. Also write down in the comment section what do you want to see next. Remember, your wish is my command. Till then, this is me Bin signing off. I shall see you all in my next video. Bye.